आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं देश के दिग्गज म्यूचुअल फंड में से एक आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ ए बालासुब्रमण्यन साहब। बाला सर, बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद सबसे पहले तो जी बिजनेस को समय देने के लिए। आपको, आपकी पूरी टीम और आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड के सभी निवेशकों को हमारी तरफ से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इसी तरह से सर सारे इन्वेस्टर्स के लिए बढ़िया वेल्थ क्रिएट करते रहें, पैसा बनाते रहें, यही हमारी शुभकामनाएं सर। थैंक यू अनिल जी। थैंक फॉर हैविंग मी पार्ट ऑफ द शो टुडे। आपका सबका व्यूअर्स के लिए और सबके लिए ये नया साल एनीवे अनदर 7 days में आ जाएंगे जी। आई टेक द अपॉर्चुनिटी टू विश एवरीवन जी ग्रेट ईयर अहेड। मेरे हिसाब से जो लास्ट 4-5 साल से जो मोहम चल रहा है बायंसी जी, मेरे हिसाब से 2023 में भी ये बायंसी के हिसाब से चलते जाएंगे। बिल्कुल। तो चलिए उम्मीद की जाए कि अगला साल भी मजबूती भरा रहेगा। आइए शुरुआत सर जरा ग्लोबल मार्केट्स के साथ की जाए। चुनौतियां शायद वहाँ ज़्यादा है, चैलेंजेस हैं। कैसे देख रहे हैं आप 2023 के लिए ग्लोबल मार्केट्स को सर? I think global market में of course I think 2022 was a tough year post I think यूक्रेन रशिया वार के बाद क्लियरली जो ग्लोबल में जो इम्पैक्ट आया mainly related to the inflation, energy prices going up and general cost of living has been going up। और उसका पीछे पीछे जो इंटरेस्ट रेट जो हाइक जो हुआ था स्पेशली and initially US then Europe, मेरे हिसाब से we are at a stage where a high inflation scenario may continue for some more time. It's not going to come down that immediately. Second is जो कोविड के हिसाब से जो लॉकडाउन जो किया था चाइना में, definitely I think is a country which has gone through a tough time for last 2 years। मेरे हिसाब से 2023 में जो रिलैक्सेशन के हिसाब से जो काम चल रहा है actually that something could actually make China to come back in the year 2023 and given the fact जो steps जो ले रहे हैं actually to come out of the COVID restrictions, so that might probably improve some sentiment towards the China. But otherwise, broadly, the global market will continue to have the hanging concerns around inflation, high interest rates regime, and also the mix between the growth expectations versus जो recession का जो बात चल रहा है actually, that could be a borderline case with respect to the recession that could come in the US market, क्योंकि जो growth rate के हिसाब से जो चल रहा है, especially in employment pay, doesn't seem to be immediately confirming that US market will get in recession, but otherwise broadly global market में the high interest rate के हिसाब से जो चल रहा है and also the high inflation may hold them at some bit of tenterhook in the global market। तो ये आपके लिए ग्लोबल मार्केट्स का पूरा आउटलुक। ग्लोबल मार्केट्स की चिंताओं के बीच सर भारतीय बाजार मजबूत रह पाएंगे? क्या व्यू बन रहा है? रेंज बाउंड रहेंगे, तेजी होगी या थोड़ा ढीला रहेगा? So as per our view 2023 would be good for buy-ins। तो हम अपना देश में अभी करेंगे क्योंकि अपने जो फंडामेंटल्स जो ड्राइव द इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए है, आई थिंक दैट कंटिन्यूज रिमेन वेरी स्ट्रांग, क्योंकि लास्ट 2-3 साल से जो स्टेप्स लिया एक्चुअली द इंडिया कंटिन्यूज टू बी different from the rest of the global market। I think that will remain, so that the buy-ins will remain, but having seen a significant outperformance, I think आप पूरा देश में देखते हैं India has been a big outperformer compared to global market। अगर चाइना का थोड़ा सा भी होप आना शुरू हो गया, there is high probability that some of the market which got beaten on very badly, China or Hong Kong, may see some bit of traction compared to India। Therefore, Indian market, as per our view, will move in a range of about plus or minus 7-8%। At the same time, जो तेजी का जो मोहम जो है, especially coming from economic growth picking up, stable interest rate regime, and well-controlled inflation in India, I think the growth aspiration for companies backed by a very strong balance sheet, but all of them I think should be favorable for creating a buoyancy। But having said that, इसके हिसाब से आपको हमें देखना पड़ेगा, there is always one number that we look at, earnings deals versus the bond deals। bond deals जो है आज के दिन पे थोड़ा सा बढ़ा हुआ एक्चुअली, ग्लोबली also बढ़ा हुआ है एक्चुअली। therefore earnings deal versus bond deals में देखते हैं क्लियरली इक्विटी का ज्यादा जो बुलिश जो पहले था लास्ट 2-3 साल से, may actually make it move in a narrow direction।
because alternate on fixed income also seems to be emerging this year. तो भारतीय बाजारों पर मजबूती का माहौल बना रहेगा। सर, आप तो इस वक्त देश में जितने फंड मैनेजर्स हैं उसमें सबसे सीनियर हैं, अनुभवी हैं, और इतने सालों से मेरे ख्याल से कितने सर बिरला म्यूचुअल फंड में 27-28 साल तो हो गए सर आपको ज़्यादा? क्या ना 28 साल से म्यूचुअल फंड में हाँ, अपना आदित्य बिरला साल म्यूचुअल हो गया, म्यूचुअल फंड में 32 इयर्स का हो गया मेरा। क्या बात है, ज़बरदस्त। तो सर ये बताइए कि जितना पैसा ये पिछले साल और इस साल हमने रिटेल इन्वेस्टर्स का म्यूचुअल फंड में आते हुए देखा, इससे क्या ट्रेंड निकल कर आ रहा है? क्या ये ट्रेंड बरकरार रहेगा? क्या ये इंडियन मार्केट्स को नीचे की तरफ अगर कभी गलती से करेक्शन आए तो सपोर्ट देंगे? आप कैसे देख रहे हैं इस बदलाव को सर? नहीं, मेरे हिसाब से जो सेविंग्स जो पहले जो म्यूचुअल फंड में आता नहीं था पहले, और मोस्टली दे वर गोइंग टुवर्ड्स एफडीज एंड रियल एस्टेट। मेरे हिसाब से लास्ट 4-5 साल से जो म्यूचुअल फंड का एक्सेप्टेंस जो आया, एक्चुअली दैट हैज गॉन अप क्वाइट सिग्निफिकेंटली। दूसरा एक समझ सबका आ गया है, जो मार्केट में ऊपर नीचे अगर वॉलेटिल के हिसाब से होते जाएंगे, अनसर्टेनिटी वजह से होते जाएंगे, फिर भी अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखते हैं, म्यूचुअल फंड्स हैव बीन गिविंग वेरी गुड एक्सपीरियंस है। Therefore, आने वाले समय में भी जो म्यूचुअल फंड का ग्रोथ 4-5 साल से देख रहे हैं, 40 लाख करोड़ का साइज है, आज वाले साल म्यूचुअल फंड का 3 लाख करोड़ का साइज है। क्लियरली आई थिंक वी आर इन दी अपवर्ड ट्रेजेक्टरी, बोथ कस्टमर addition point of view as well as for experience that mutual fund can give for the long term point of view. दूसरा एक एक्चुअली क्लियरली म्यूचुअल फंड एमर्ज हुआ है, एक्चुअली द म्यूचुअल फंड नाउ टुडे बिकमिंग द सॉल्यूशन ड्राइवर। एंड कोई भी जन को अगर लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट हिसाब से, सॉल्यूशन के हिसाब से, गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट हिसाब से इन्वेस्ट करना है, आई थिंक म्यूचुअल फंड हैव बीन प्लेइंग द बिगर टूल, द रोल ऑफ बिगर टूल फॉर इन्वेस्टर्स टू मीट द ड्रीम। तो वो बेसिस पे आई थिंक मेरे हिसाब से ये आने वाले समय में जो बढ़ते जाएंगे, इंडस्ट्री का और बड़ा होते जाएंगे, न्यू इन्वेस्टर्स आते जाएंगे। और डिपॉजिट में जो पहले जो लोग जाते थे, आज के दिन पे आप देखेंगे एक नंबर आरबीआई का रिपोर्ट का आप देखें, डिपॉजिट ग्रोथ हैज बीन लो, credit growth has been very good. That means people are not putting actually more money in deposits. They are looking at other investment opportunities. उसमें मेरे हिसाब से म्यूचुअल फंड का रोल बड़ा हो सकता है। बिल्कुल। तो म्यूचुअल फंड ने पिछले 1.5-2 साल में ज़बरदस्त काम किया है, रिटेल इन्वेस्टर्स ने भी कॉन्फिडेंस के साथ पैसा लगाया। सर ऐसे में बताएं, अब 2023 के लिए कौन सी थीम्स, कौन से सेक्टर्स आपको लगता है जहाँ निवेश करना फ़ायदेमंद हो सकता है? एक तो ऑफकोर्स 2023 में भी मेरे हिसाब से जो बेसिक डिसिप्लिन का इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जो करते हैं, which is basically the core portfolios in the equity and some bit of allocation towards the debt, they call it the core portfolios. What do you mean by core portfolios? Basically invest in large cap focused fund, flexi cap focused fund, and 1 or 2 are mid cap and small cap fund, and balance advantage fund kind of fund. ये आई थिंक मेरे हिसाब से कोर पोर्टफोलियो बनना चाहिए। द सेम टाइम फिक्स्ड इनकम का भी आप इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि 2023 में आज के दिन पे जो इंटरेस्ट रेट जो चल रहा है, जो पहले जो एक्सपेंड किया था अर्निंग्स यील्ड वर्सेस इंटरेस्ट रेट के हिसाब से जो मार्केट में चलते हैं, क्लियरली फिक्स्ड इनकम का लास्ट 2 साल से कोई भी निवेश नहीं करते थे उसमें, क्योंकि सब लोग इक्विटी के पीछे चल रहे थे। क्लियरली देयर इज अ मेरिट फॉर फिक्स्ड इनकम फंड्स टू बी कंसीडर्ड दिस ईयर, सच अ लो ड्यूरेशन फंड, डायनामिक बॉन्ड फंड, सच फंड्स आर अवेलेबल टुडे। अगर 2-3 साल के लिए अगर इन्वेस्ट करना है, डेफिनेटली 2023 में ये निवेश करने के लिए कोशिश करना चाहिए। Given the fact that experience that one investor has to get should be looked at the overall portfolio basis, not just only in one asset class. And in terms of trend in sectors, definitely जो market का जो the heavyweight index है, which is basically sector wise, banking and financial sectors should continue to do well. And we also believe the private sector का capex ये साल में I think और बड़ा हो सकता है। वो basis पे capex led growth also would come in the country, which basically the capital goods sector should do very well. And auto as a sector जो gone through last 2-3 साल का consolidation, we'll probably see आने वाला समय में जो consumption के हिसाब से, जो consumer के हिसाब से आज के दिन पे जो aspiration बढ़ते जा रहे हैं, even auto sector also should do very well. But broadly from the investors point of view in the mutual fund sectors, a mix of equity and mix of debt is creation, I think would be more key. On the contrary, for HNIs and those who are already exposed to equity, even fixed income should not be ignored in the year 2023. तो ढेर सारी थीम्स हैं जो आपको अच्छा मौका दे सकती है, उसमें से रेट सेंसिटिव्स, बैंक, ऑटो, फाइनेंशियल्स, ये सबसे ज़्यादा बेहतरीन थीम होगी। सर कोई ऐसे सेक्टर्स हैं, कोई थीम्स हैं जिनसे थोड़ा सावधान रहना है, जहाँ पर थोड़ी रिस्क नीचे की हो सकती है?
तो एक तो ऑफ कोर्स clearly I think the commodity sectors may see some kind of volatility. That's one. I think that's something one has to just keep in mind. Volatility तो बढ़ते जाएंगे. Secondly is जो import dependent है, I think currency का थोड़ा I think इस साल we may probably see some more bit of pressure on currency. So therefore import driven sectors still OMCs are not coming in the radar. Some of these companies which are heavily dependent on import may also have some kind of struggle. But at the same time, interest rate sensitive sectors, अगर कोई भी interest rate sensitive sectors ज़्यादा से interest rate बढ़ी है, तो interest rate sensitive sector किस का ज़्यादा borrowing है, उनके लिए थोड़ा से I think नुकसान हो सकता है. Therefore, from a big picture point of view, I think very difficult to go by the sectors क्योंकि हर sector में कंपनी का बैलेंस शीट बहुत अच्छा भी हुआ एक्चुअली. देयरफॉर वन हैज टू बी मोर चूजी ऑन स्टॉक्स रादर देन सिंपल सेक्टर वाइज एक्सपोजर दैट वन शुड लुक एट इट. ओके, तो ये आपके लिए पूरा का पूरा आउटलुक. बाला सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, हमारे दर्शकों को पूरा गाइडेंस और आउटलुक बताने के लिए 2023 के लिए. एक बार फिर से आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर. थैंक यू और सबको हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन. हैप्पी न्यू ईयर सर.